नमस्कार, क्या हाल है सर जी। वेलकम वेलकम। आज हम खेल रहे हैं होराइजन जीरो डॉन। नहीं भाई, मेरे दिमाग में अभी तक जीरो डॉन बैठी हुई है। हम खेल रहे हैं होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। और काफ़ी कुछ किया था हमने लास्ट सीन में भाई। वेस्ट के अंदर दाखिल तो हो गए, हम अंदर घुस तो गए हैं। बाकी अभी बहुत सारे यहाँ पे मिशन करने हैं और बहुत सारा इलाका कवर करना है, तो धीरे धीरे होगा। नमस्कार सर जी। तो धीरे धीरे होगा। गेम बहुत बढ़िया भाई। मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख रहा था कि वेपन्स वगैरह कैसे यूज़ करने हैं, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे यूज़ करनी है। तो वीडियो देख रहा था तो मैं देखता ही चला गया भाई। वीडियो बहुत सारे वीडियो थे, तो मेरे को पता लगा कि बहुत कुछ है यार इस गेम के अंदर। मतलब जो जितना होराइजन जीरो डॉन में था उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इसमें है। नए वेपन्स हैं और जो पुराने वेपन थे, कुछ एक वेपन वो उन्होंने क्या बोल सकते हैं, उनको नकारा बना दिए शायद। तो नए वेपन्स को भी यूज़ करके देखेंगे। एक वेपन मैंने देखा भी था लास्ट स्ट्रीम में, तो वो पता नहीं क्यों मेरे को वो जो डिस्क वाली कोई वो थी, वेपन था कोई डिस्क वाला। तो वैसे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था वो। मैंने कहा यार क्या मारूंगा इससे, लेकिन जब मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें बंदा बता रहा था कि ये बहुत बढ़िया वेपन है ये। तो वो भी देखेंगे यूज़ करके, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी गेम में। माउस कहाँ चल गया मेरा। भाई माउस पॉइंटर ही गायब हो गया था मेरा अभी थोड़ी देर पहले। तो भाई ये देख रहे हो जो मेरा राइट साइड में नीचे मेरा जो ये वेपन है, उसके साथ दो ट्रायंगल बनी हुई है ना। एक जो ये पर्पल कलर की है और एक येलो कलर की है। तो ये दो स्पेशल पावर्स है भाई। ये मैं देख रहा था कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। एक का तो मेरे को पता लग गया है, दबा के स्पेस दबाना है। दूसरी साली कैसे यूज़ होगी नहीं समझ आ रहा भाई। आज कौन सा मिशन करोगे आज भाई, देखते हैं। आज वैसे मेन मिशन तो करना ही है मेरे को। और ये मैं दिखा देता हूँ वैसे। कल तक हमने ना थोड़ा सा इलाका कवर किया था, क्योंकि ये जो टॉल नेक है ये किया था ना हमने, तो यहीं पे था कल मैं। तो मैं थोड़ा सा ऑफलाइन सर्च कर रहा था गेम में कि कोई और कौन कौन सी जगह हैं, तो मैं एक बार खोल लेता हूँ जाके, ताकि फास्ट ट्रैवल करके वहाँ जा सके। तो इसलिए थोड़े से इलाका खुल गया है। लेकिन अभी हमारा जो मेन मिशन है ना, वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये रहा मेन मिशन, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ कि क्या करें, मेन मिशन करें, साइड मिशन करें, क्या करें। भाई दो साइड मिशन पड़े हुए हैं वैसे। रिटर्न टू जावर, ये कहाँ पे जाना भाई, ये कौन देखें जरा। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि वापस जाना पड़ेगा हमें। आई थिंक यहाँ पे फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ मैं, है ना। फास्ट ट्रैवल करने के लिए एक बैग चाहिए होता है, फास्ट ट्रैवल बैग। वो ना हो तो कर नहीं सकते भाई फास्ट ट्रैवल। Be welcome, Outland. So, you've returned from the west. Any luck? The bristlebacks were being penned by Tanakh rebels on the other side of the mountains. Ulvin's explosives opened up a sinkhole, dropping them into the tunnels. Which they followed to the mine and out into the Daunt. Right. Aside from the rebels, if anyone is to blame for the bristlebacks, it's Ulvin. Radiant beams of the sun! And all this time he was pointing the finger at us. Bring Ulvant here. Petra, too.
साइड मिशन कर रहे हैं सर जी, साइड मिशन ही है ये। ये एक बंदा है, बहुत हरामी बंदा है, इसको ना Summoned like a blasted ale winch. पकड़ना था। आप You देखते best क्या be होगा। meaning to put pen to parch. What you're doing with the magistrate. What? Why is she here? I live here too, lugnut. So what's this about? Thanks to the Savior, the sun has shown the truth on the Bristleback incursion. Tanakh rebels were keeping pens of machines on the other side of the mountains. A sinkhole swallowed them, releasing them into the underground tunnels that led east and out into the Daunt. So it was an accident. But let us not forget that it was the Karja. I'm not done. The sinkhole only formed due to your unauthorized blasting in the southern mine, Ulvant. You are responsible for the machine rampage, the workers we lost, the destruction the Bristlebacks caused. All of it. My dear magistrate, has your precious son baked your senses? I would never give such an order without first consulting you. Evidence says otherwise. Aloy found the shipping manifest in the mine. You skirted the laws of the Sundom, Ulvant. All for a few extra shards. Greedy as ever. And you almost drowned your other miners. And sent that oversized tool over there to intimidate a bunch of refugees. I demand an official investigation. I won't be the victim of some Karja scheme. Certainly. We'll conduct a thorough inquest into everything. The Bristlebacks, the mine, the refugees. Every business deal you ever put your name to. Well, that's not necessary, is it? What if I just return to the claim? Oh, well, that would save the crown the cost. Of course. I'll be on my way as soon as I wrap up some previous commitments, tie up some loose ends. After all, the welfare of Chainscrape's people in a transition like Nope, this... you're leaving right now. Chainscrape will be just fine. You think she can run this scorched-out forged dump? Ha! Knock yourself out. Get out. Oh, don't want you, don't need Down you. with all that! Sergeant Ray! Get off me! Mud looks good on you, Ulvand. As the sun burns away shadow. Thank you for that, Aloy. Well, he had it coming. Here, please accept this token of gratitude. You've done the Sundom and my sanity a great service. And I believe we have some matters to discuss. Guess we do. Not the most pleasant boots to fill, but I'll wear them. All thanks to you, Flamehair. भाई मिला क्या, ये तो बताओ। Okay. क्या मिला भाई? Chainscrape will be better off with Petra in charge. 2 स्किल पॉइंट बस। मेरे को लगा कोई वेपन मिला होगा साला। चलो स्किल पॉइंट ही स्पेंड कर लेते हैं। कहाँ लगाऊं स्किल पॉइंट? भाई मेरे पास तो 10 स्किल पॉइंट है आई थिंक। वाह। Ammo export, passive boost, craft more ammunition from the same amount of resources. ये वैसे बढ़िया है। Deep concentration, ये भी बढ़िया है सर। Heavy weapon, deal more damage while using a heavy weapon. Okay, ये भी कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है वेपन करना ज़्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि अभी हमें मशीन से लड़ना है ना, तो उसके लिए वेपन बहुत ज़रूरी है भाई। इसके अलावा स्टेल्थ वाला भी बहुत अच्छा पोर्शन है, ये भी देख लेते हैं।
स्टेल्थ रेंज, इससे क्या होगा? डील मोर डैमेज। अच्छा ये बढ़िया है वैसे। नाइस, इससे आगे मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि उनके लिए मेरे को ज़्यादा स्किल पॉइंट चाहिए। ये देख लेते हैं क्या पोशन, हाँ ये कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, काफ़ी सारी स्किल्स हो गई हैं। एक मिनट, यहाँ पे भी कुछ है। King of Art managed to make peace with us, didn't he? The Tanakh drove the Red Raids out from after. Seat's always One open. wants to play strike. Come for another round? How are the refugees doing? They keep to themselves mostly, but they have food and shelter. Some even found work around town. Good thinking, giving them that Stormbird heart. I'm glad it helped. I hope they can get back on their feet. I'll keep checking up on them. Then they'll be just fine. I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back, but realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. And thanks to your handiwork, I got my hands full getting this place into shape. I guess you found the right place. Guess I did. Has Tolland been giving the refugees any trouble? Nah. His shop got closed down not long after Ulvin got the boot. So, he cleared out of town. Took his goons with him, too. Good riddance, I say. The concession decree Ulvin wanted, what was it exactly? And how would it have helped him? Big old pig diddle, that's what. A writ that would have put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would have meant that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors backing the claim to pour in the shards and expand their business. And since Ulvin had a stake in all those claims, it would have made him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would have become an Osram municipality, so he could have bought enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Almost got away with it, too. Well, I have to be going. Thanks for the drink, Petra. I'm glad I stopped by. Anytime, Flamehair. भाई साहब नाम से नहीं बुला सकती फ्लेम हेयर, ये क्या बात हुई? ऑलराइट, यहाँ पे मैं वो देख लेता हूँ, एक मर्चेंट चाहिए भाई मेरे को, बिकॉज मैं चाहता हूँ अगर मेरे को वो मिल जाए ना कोई बढ़िया वेपन वगैरह तो, लेकिन यहाँ पे मर्चेंट है ही नहीं आई थिंक, है ना? आउटफिट वाला है, यहाँ से आउटफिट मिल सकती है, देख लेते हैं एक बार इस क्लास कौन कौन सी आउटफिट है। I've heard of... ओसाराम एक्सप्लोरर, ये वैसे ठीक लग रही है मेरे को। मेली डैमेज इसमें एक वो लगी हुई है वीव, ये ट्राई करके देखते हैं वैसे। your adventures. My armor can help. ओके, इसको अपग्रेड करके देखते हैं एक बार। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये आउटफिट ना उसके लिए ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको
डायरेक्ट फाइट करनी है ना, रेजिस्टेंस बढ़ा देगी, और ये स्टेल्थ के लिए ज़्यादा बढ़िया भाई। ये कर लेते हैं अपग्रेड। अरे नहीं कुछ चाहिए इसके लिए मेरे को। लॉन्ग हेड, लॉन्ग लेग, सर्कुलेटर, क्रिएट जॉब। यार ये इसके लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी भैया, मतलब नहीं। About time he went crawling back to whatever damn hole he came from. ऑलराइट, मैप पे देख लेते हैं भाई ये कहाँ पे है इसका क्वेस्ट। हंटिंग ग्राउंड, सॉल्वेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या चीज़ है भाई? रिटर्न टू द लूट द शेल वॉकर, रिटर्न टू द, अच्छा भाई इतने सारे मिशन है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा साला। अच्छा ठीक है, कैंप फायर ढूंढते हैं भाई, वहां से फिर फास्ट ट्रैवल कर लेंगे, बिकॉज कैंप फायर से अगर फास्ट ट्रैवल करो ना तो भाई कोई पैसा खर्च नहीं होता उसमें। एक मैनुअल सेव भी कर लेते हैं। Huntress! You're back! I took down that shell walker for you. Vonda! Rendor! We got a pickup! Per our contract, here's your payment. This will definitely help me make some great armor. But... Well, I realized an armor made out of shellwalker plating's good, but with just a few minor additions, it could be so much better. If you'd be willing to take on a few more contracts. What do you say? साला हरामजादा भाई, साला पहले नहीं बता सकता था, अब और कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे इसके लिए। अलार्म एंटेना, स्कैवेंजर, ट्रेड। पहले ट्रेड देख लेता हूँ, इससे क्या क्या मिल सकता है मेरे को। ये ले लेता हूँ भाई। ऑलराइट ठीक है। ओह भाई इससे मिल जाएगा, ये मैं लगा, ये यूज करके मैं अपग्रेड कर सकता हूँ अपना वो जो मेरी वो है आउटफिट। नाइस भाई, रेयर भी है इसके पास, बहुत कुछ है यार इसके पास तो, बट इसके पास वेपन नहीं है, दिक्कत ही है सारी। Good call. गुड कॉल नहीं, रुक जा। It's good to see you, Huntress. Want to take one of my contracts? हाँ कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट। what else do you need for your armor? Alarm antennas? Strong? Supple? I could use them to make my armor more flexible? We picked out a herd of scroungers already. I'll, read through the contract. See what I can do. Best of luck! Tell me more about these contracts of yours. I was thinking, Scrabber Jaws are powerful. I could use them to strengthen my armor. Crew spotted a pack of them not far from here, primed for salvage. I guess I can give the contract a look. Fantastic. I should get going. I'll be waiting for that salvage. This is what a ऑलराइट, अब मेरे को वर्कबेंच चाहिए। वर्कबेंच कहाँ मिलेगा? ये रहा।
फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं। भाई छोटे मोटे काम करने में ही साला बहुत टाइम निकल जाता है इसमें तो। क्या करें भाई, इस गेम को अगर आप सही ढंग से खेलना ना ये सब कुछ करना पड़ता। एक मिनट यहाँ में सेव कर लो। नाइस। We've got our eyes on you, visitor. The red rot is Turn back, Outlander. Stone's echo is for Utaru only. अबे नहीं, Guess I'm not getting in there. अबे नहीं जा सकता अंदर यार, ये भी बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। It's been some time. कोई और ढूंढना पड़ेगा। ये रहा वर्क बेंच। Good to see you. ऑलराइट, कहाँ पे है ये? Friend from the Nora. Coming by. वो रहा। अबे कौन सी डाली हुई है मैंने? ये है ना? हाँ। लॉन्ग लेग विंग बर्नर। अभी एक चीज मिली थी, अब दूसरी चीज चाहिए मेरे को। भाई साहब क्या मजाक हो रहा है। ओके ये लॉक्ड है बिकॉज जब तक मैं तीसरा अपग्रेड नहीं करूंगा ना ये खुलेगा नहीं। चलो तो बस कर रहा है भाई, अटक ही जाती है गेम। यहाँ पे एक मर्चेंट ढूंढता हूँ, वहां से उससे मैं देखता हूँ अगर मेरे को बो मिल जाए ना बढ़िया वाला। हंटिंग गुड्स हंटर। शार्प शॉट बो, लॉन्ग रेंज उतारू बो, बेसिकली इन फायर एरो फायरिंग एरोज दैट हैव हाई नॉकडाउन पावर एंड डील ए लो अमाउंट ऑफ डैमेज। नॉकआउट करने में ज़्यादा बढ़िया है भाई। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा ये लेना चाहिए कि नहीं। ये क्या चीज़ है? अच्छा ये वही डिस्क वाला भाई हथियार। ये मैं ट्राई तो करना चाहता हूँ लेकिन इसके लिए मेरे को वो चाहिए। क्या करें, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई। ओके खरीद लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। Many thanks. और एक और ये जो है ना स्प्लाइसर सा की जॉब लगा लेता हूँ मैं, ताकि Come back anytime. कभी मिले। Okay, knockdown precision arrow are now available for one of your sharp shot bow. These arrow do less damage than standard type but have high knockdown power which allows you to stagger or knock down enemies more easily. Remember aim for the legs. अच्छा
ऑलराइट, ये तो हो गया। यहाँ पे एक मिशन भी है भाई, ये मिशन ले लेते हैं। Or did you miss that part? No, I saw. You're right. I'll have your back. Nora, my gear will keep you alive. Heard you got fired from Quarry. I take one little dose and that damn force woman is firing. Oh, don't you late for something? Nice. Savior, you're my last hope. Conover. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse... they're here in the Daunt. Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the Elite. I saw one of our sentries, Lorevic, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Lorevic tried to kill me. I fought back. It was him or me. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Lorevic to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Lorevic was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear everything. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. ठीक है भाई। Tell me exactly what happened. Weeks ago, during a shift change, some trespassers slipped through the gate. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Nozar didn't see the need to give chase. Let the Tenakth take care of them, he said. Nozar wasn't one to be sidetracked, sun rest his soul. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. And Lorevic, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different, jumpy. So when I spotted him sneaking out of the barracks after hours, I followed. I found him arguing with a stranger, and when Lorevic mentioned the Eclipse, I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Lorevic lunged at me with his knife. Instincts took over. Sentries heard the scuffle and found me standing over his body. Why don't you believe him? We combed the woods. Searched Larevic's bunk, searched it again, didn't find anything. Look, Conover's a good man. I don't believe he murdered Larevic in cold blood. But Nozar only listened to facts, and those who remain follow his example. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. He doesn't deny it, right? No, but more Eclipse And are out considering there. there's no evidence backing up this Eclipse story, well, we can't question a dead man. But hey, if you find a bunch of Eclipse soldiers hatching an evil plot in the woods, please do let us know. The meeting you witnessed. Did you hear anything else about their plans? No. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's nothing there. I can see things others can't. If the Eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Sun bless your search. Don't get your hopes up, soldier. ऑलराइट भाई, टैब बोल रहा हूँ, बहुत सारे वो क्वेस्ट मिल रहे हैं हमें। तो गो टू द क्लियरिंग, लेवल 7 का मिशन है ये। तो लेवल 8 के भी मिशन मिले हैं। ये कौन सा मिशन है भाई? टॉक टू द थुरलिस थुरलिस, ये कैसा नाम है भाई? यही कर लेते हैं भाई पहले। हंटिंग ग्राउंड्स आउट, अच्छा समझ रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया था पहले, ठीक है, फिर यही कर लेते हैं मिशन।
भाई ये किस लिए पौधे हैं रेड वाले? पता नहीं भाई, मैं उठा रहा हूँ बस। भाई इस गेम में ना बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं, वो बोले मैकेनिकल मगरमच्छ, और बड़ा टफ होता है उनसे लड़ना। अबे ये थुरलिस है साला, जैसा नाम वैसा ही काम होगा इसका। एक मिनट मैं जरा देखूं, अपग्रेड कर सकता हूँ अपने उसको, वेपन को। कौन से वाला वेपन था भाई? अबे यार ये बार बार यही चाहिए साला, लीप लेशर सर्कुलर। जॉब क्रिएट कर देता हूँ मैं। ये कौन सा वो है भाई मेरे पास? स्ट्रॉन्ग आर्म हंटर वो, ये कौन सा वो था? ये भी हंटर वो है। इन दोनों में फर्क क्या भाई दो? पता नहीं भाई। आउटफिट का भी एक अपग्रेड है कोई इसका, लेकिन ये नहीं कर रहा भाई मैं अभी फिलहाल के लिए यही रखूंगा, क्योंकि स्टेल्थ के लिए आई थिंक बढ़िया वो। और क्या है भाई? और कुछ नहीं। I'll take care of this. Fearless. So you decided to visit the hunting grounds. Good on you. Isvad here has all kinds of trials, so hotshots like you can put their machine hunting skills to the test. Or as the Tanakh call it, earning your stripes. I thought hunting grounds were Karja. The Tanakh have them out west, too. Though if you ask the Karja, Westerners stole the idea from the Sundom. In fact, the Tanakh used this place for a while after they kicked the Karja out of the region. They even left behind some of the special coins they handed out to those who earned stripes. Look, they're medals, Karja ones. More spoils. I heard you can trade them for gear somewhere in the Tanakh clan lands. Pretty gruesome, I know. Then again, so were the Karja during the Red Raids. Come to think of it, if you plan on going west, I could convince Isvad to give you some, if you earned stripes here. Seems like they might be of use to you out there. Thanks. You need anything for the trials, come see me. I have some wares I'm sure you'd find handy. Good luck. ये क्या था? ग्राउंड कीपर, ये कौन है ग्राउंड कीपर? ये एक मिनट रुक जाओ यार, पाउच भी देख लेता हूँ मैं। पाउच अपग्रेड करने के लिए जॉब बना लेता हूँ मैं, बिकॉज मेरे को ये वाला पाउच अपग्रेड करना भाई। रैकून हाइड, रैकून चाहिए इसके लिए मेरे को। ये कौन सा पाउच है? इसके लिए भी जॉब क्रिएट कर लेते हैं। रैबिट हाइड, ओक्सबॉन, ये भी जॉब क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं भाई इससे। If you're looking for metals prized by the Tanakh, you can earn them here, Savior. Oh, and I'd like you to have this, if you care to use it. Warrior Consider it bow. my thanks for getting Thurles out of trouble. Hunting grounds. All Karja soldiers know that the sun sets on the unprepared. These grounds have long guided their hunters to face the fierce machine prowling the western border. Shooting of machine parts to use shock amount weapon efficiently. The trials found here will. ठीक है भाई। Tier trial.
ये ट्रायल नो नॉट कंप्लीटेड. शूट ऑफ एंड लूट स्क्राउंजर पावर सेल्स. पावर सेल उतारने इसके. यूज योर फोकस टू टैग स्क्राउंजर्स पावर सेल. शॉक वॉरियर बो. समझ गया. Go down the ropes, and I'll start timing it. Gotta find a cauldron to learn how to override machines. कौन सा वो कह रहा था? इसको पता ही नहीं लगा भाई किसने मारा है. Acid will do a lot of damage. पावर सेल चाहिए लेकिन मेरे को. Heart's flying. अबे मार. मार. ओके. वो भाई इसका पावर सेल कौन सा होता है? नहीं, इससे पंगा नहीं लेना. Oh, here we go. भाई ट्रायल पूरा नहीं हुआ अभी. आई हैव नो आइडिया भाई मेरे को करना क्या है.
भाई साहब इस इस ट्रायल को करने का फायदा क्या है? ऊपर टाइमर चल रहा साला। भाई, मेरे को तो समझ नहीं आया क्या है ये। भाई ट्रायल खत्म नहीं हुआ? अबैंडन ट्रायल। No. You want to try another challenge? भाई क्या करना था ये? यू फेल द मीट द ट्रायल गोल्स, लेकिन करना क्या था मेरे को तो समझ नहीं आया। रीट्राई, वो कह रहा था कि सेल कलेक्ट करने हैं। Just use the ropes to jump 2 in. पावर सेल लूटेड। पावर सेल लूटेड, अच्छा 2 पावर सेल ले गया ना। शूट ऑफ द एंड लूट द स्क्रॉन्जर पावर सेल्स। ट्रैवल स्क्रॉन्जर के पावर सेल चाहिए मेरे को। Can't override that now. तो स्क्रॉन्जर तो यही है, Cauldron, if I can find one. और इसका पावर सेल ये पावर सेल है। Should hit it with frost ammo. देख लिया किसने? चलो आराम जा दो, पावर सेल लेने दो। ट्रायल कंप्लीट। निकलो यहाँ से। You did well. Your reward, Savior. क्या मिला भाई? फुल स्ट्राइप्स। ट्रायल कंप्लीट। क्वार्टर स्ट्राइप्स रिवॉर्ड, हाफ स्ट्राइप्स रिवॉर्ड, फुल स्ट्राइप रिवॉर्ड, तीनों मिल गए। गाइस क्या मिला गया है? हंटिंग मेडल, स्मॉल मशीन कोर। अबे अब नहीं कर रहा मैं ट्रायल ये। Until you return, Savior. You wish to practice your hunting skills? नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। शौक वॉरियर वो, इसको यार मैं कहीं लगा लेता हूँ किसी स्लॉट पे। वहाँ पे लगेगा, कैसे लगाते हैं? कहाँ पे लगा हुआ है भाई? मेरे को दिख क्यों नहीं रहा ये? वेट अ सेकंड। अच्छा ये रहा, ये रहा। ओ अच्छा ये शौक करने के लिए है तो। Here to train for the hunt, Savior? भाई क्या करना है इसका? ओ नहीं भाई मैं नहीं कुछ कर रहा। लो यहाँ से, साला फुद्दू सा मिशन था।
ये कर लेते हैं, गो टू द चार्जर साइट, ये बढ़िया रहेगा भाई। ओ भाई साहब, रात को तो बहुत खूबसूरत लग रही है यार ये गेम भाई, मेरे को नहीं पता था। मैं तो दिन में देख के बड़ा ही वो हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। ये तो साली रात को और भयंकर लग रही है भाई, भयंकर मतलब बहुत बढ़िया। जाओ ये भाई, तो है कहाँ पे? दूर है थोड़ा सा। The charger herd Laren's contract mentioned should be close by. I want to look through the contract one more time. Make sure I didn't miss anything. There are the chargers. If I can take a few of them down, it should lure in the scrappers I'm looking for. Kill the chargers. Okay. Shock ammo could help. ओके, ये यूज़ करके देख लेते हैं शॉक एमो। भाई कोई खास डैमेज नहीं हुई उससे, शॉक से। बहुत ही बेकार था भाई शॉक तो। किल द चार्जर्स। कितने चार्जर मारने ये नहीं बताया इन्होंने। देख लिया भाई। Few more. देख लिया इसने। Just need to take down a few more. अभी कितने आगे?
That's one. Still in this fight. क्या करना क्या? Loot the scavenger. That should do it. Time to take these parts back to Larend. अच्छा ये पार्ट लेके जाने थे. I'll put these in my pack. ऑलराइट, ये भी हो गया. मेरे को क्या मिलेगा उसके बदले में ये नहीं पता. कोई बढ़िया चीज़ मिल जाए तो यार बढ़िया. अभी तक तो बहुत ही लो लेवल के हथियार मिल रहे हैं, बहुत ही लो लेवल की चीज़ें मिल रही हैं. ये क्या था? I'm back in range of the vista point. I could try to find where the image was taken. All right, let's go. भाई साहब इनसाइड मिशन ने परेशान कर दिया मेरे को, सही बता रहा हूँ. और ये अभी शुरुआत है. अभी तो और मिलेंगे. ये कहाँ पे है? अच्छा बहुत दूर है तो. भाई मैं इससे अच्छा फास्ट ट्रैवल कर लेता हूँ. वैसे ही भाग के जा रहा हूँ मैं, मतलब. Ignoring me again? We already got maps. If you call a few squiggles on a piece of paper a map, sure. क्या हो रहा है? Perfect timing, Huntress. I got you the scrapper jaws you needed. Ah, some fine components. Here, your payment. ओके, ट्रेड क्या करूँ अब मैं? इसके पास कुछ है तो है नहीं साले के पास. ना हथियार है भाई, पार्ट्स जरूर है इसके पास बहुत अच्छे अच्छे. ठीक है चीज़ है. अच्छा ये मेरे को चाहिए आई थिंक, है ना? इस Good call. Hey, Lloyd. Are you looking to buy some salvage? रुक जा भाई, मेरे को वो चाहिए वर्क बेंच. साला वर्क बेंच लेने के लिए भी इतनी दूर जाना पड़ता, बताओ. यहाँ पे इसका एक और मिशन था वैसे. मैं इसका मिशन कर लूँ पहले.
भाई मेरे पास मेटल शार्ड कम हो गया। नहीं ये तो मेन मिशन है। मेन मिशन अभी नहीं करना भाई। सैल्वेज कॉन्ट्रैक्ट, फाइंड अदर सैल्वेज कैंप्स। हाँ ये करना था मेरे को। गो टू द स्क्रंजर साइट, ये कर लेते हैं भाई। यहाँ पे ये यहाँ से पहले तो फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे कर लेते हैं फास्ट ट्रैवल, ठीक है ना। यहाँ पे वर्क बेंच भी है, मैं जो अपग्रेड करना चाहता हूँ कर लूँगा और उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। अबे तेरी गाली निकल रही थी मेरे मुंह से। चार्ट कम पड़ गए भाई। चार्ट कहाँ से लेके आऊँ मैं? मेटल शार्ट यार, ये बड़ी ठीक है। मिशन कर लेते हैं, वहां से शार्ट मिल जाएंगे। मशीनों को मारेंगे तो शार्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। उधर जाना मेरे को। This must be the clearing where Conover says he saw the eclipse. Bloodstains. It's as good a place to start as any. Could shoot it with fire. भाई रात को कितने खतरनाक लग रहे हैं ये। ओके मैंने इन जानवरों को इसलिए मारा क्योंकि मेरे को इनका मीट चाहिए था, बिकॉज मेरे को अपग्रेड करना है पाउच, है ना। नहीं स्क्रंजर साइट थोड़ी दूर है ये। अबे Ready for anything now?
must be close to the machine site Laren's contract mentioned. I should read it one more time, just in case. Scroungers, just like Laren said. I need their antennas. If I shoot them off without getting spotted, everything should go smoothly. Exploring cauldrons might teach me how to override these things. ओके इसके एंटीना चाहिए मेरे को ना कितने चाहिए आई डोंट नो Acid ammo could help here. ये क्या चीज़ है रेकून है कि और है यार रेकून चाहिए मेरे को एक और One antenna here. 3 चाहिए एंटीना ओके Now I need to find any antennas I clipped. Just need one more of these. ओके तीसरा ये रहा Pouch is full, but my pack has room. देख लिया I need to pick up any antennas I clipped. एंटीना कहाँ गिरा है पूरा That's all I need. निकलो
बेटे अब क्या फायदा, अब तो निकल गया मैं। अबे ये क्या है? अच्छा अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट में हो ना इसलिए। साले बोर इतने फिर रहे हैं भाई। एक मिनट, नाइस, रैकून वाला भी हो गया कंप्लीट। ओके वापस चलते हैं। ये भाई बहुत समस्या है इस गेम के अंदर। इतने सारे साइड मिशन है और इतना कुछ करना पड़ता है। बताओ, मेरे को पाउच अपग्रेड करने हैं तो ये जानवरों को मारना पड़ेगा, और ये जानवर हर जगह नहीं मिलते हैं। Got the alarm antennas you asked for. Ah, perfect. These will do. As promised, here's your payment. Maybe now you'll consider taking my other contract. Should be easy enough for a skilled hunter like yourself. Looks like you've got everything you need to make your armor now. Actually, our scouts spotted a fanghorn nearby. Spews fire like a blazing forge. If I had it, my armor could resist an inferno. What do you think? I'll check the details later, see if I can track it down. You won't regret it. वो भाई को और दे दिया इसने। यार मेटल शार्ड मेरे को पहले ही बहुत कम हो रहे हैं, मैं अभी नहीं खरीद रहा कुछ भी। Oh, not buying anything. That's all right. I promise. These are the last parts we'll need. Huntress. ओके, इसका क्वेस्ट कहाँ पे है बाय द वे? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, यही है ना? फैंग होन, हाँ यही है। ये भी कर लेते हैं भाई। और मैं मशीनों को मारना भूल गया भाई, दोबारा मार दूंगा, मेरे को शार्ट चाहिए। ये कहाँ पे है? दूर है क्या? ये पास में ही है। Making good use of this. ये क्या चल रहा है इधर? To knock the rebels. They're trying to corner those Osram. This ends here! Taking the shot! अबे गलत बंदे। Yeah, I can fight too! Nice. If it isn't the hero of the day. Sure, I'm glad you came by when you did. Are you all Delvers? We've been working No Man's Land for a while. I was hoping to get back to Barren Light by the time they opened the gates, you know? After that embassy of theirs. Seeing as how we almost got minced to pieces just now, I'm guessing things didn't go so well. You could say that.
It's not like no man's land was safe to begin with. But I didn't think I'd have to worry about the Tanakh, the neutral territory. And now, they're riding machines. If you were headed back to Barren Light, why did you stop here? We ran across some ruins nearby. Thought we'd take a gander, find some good salvage. But the place is full of weird red crystals. Can't get through the stuff. So we ended up making camp here. First thing tomorrow, though, we head straight to Barren Light. Should probably send a message to our crew down at Jagged Deep about all this, too. Jagged Deep? It's a dig site by this big lake down south. Old world scrap everywhere. Can't miss it. And that's my cue. Here. Thanks for helping us out. Maybe I'll get into more trouble and see you around. Well, let's hope not. ऑलराइट, एक स्किल पॉइंट मिला भाई। 2 स्किल पॉइंट है भाई। ये तो बड़ी बेकार स्किल लगती है मेरे को साली। ये कौन सी है ये? रैपर वाली नोरा वॉरियर कॉम्बो है तो कोई साला। डील मोर डैमेज, ये कर लेते हैं। नाइस। मेरे को इस तरफ जाना था, वो कर लेते हैं पहले। Get my kit dry at least. I see machine tracks. Might be the Fanghorn I'm looking for. क्या करना क्या मेरे को यहाँ पे? एक मिनट देख लेता हूँ मैं जरा। एग्जामिन द मशीन ट्रैक्स। अच्छा ट्रैक्स कहाँ पे? ट्रैक ये रहे। There's a lot of different machine tracks here. I'm gonna need my focus to tell them apart. ओ ये भी है। Bristleback tracks. Not what I'm looking for. I can turn this around. No luck. These tracks were made by a charger. अबे मरने आ गया तेरे को? भाग लो अब सालो। अबे अब कौन है भाई? Maybe I should find those Fanghorn tracks before I head out.
तो क्या कर दिया था भाई इन्होंने, इनको मारना जरूरी था बिकॉज मेरे को शार्ट भी चाहिए, दूसरा मैं आराम से कर सकता हूँ अपना मिशन। Here again. Let's see if I can find Laren's Fanghorn now. भाई की तो ट्रैक बचा यही होना चाहिए। Found the Fanghorn tracks. The trail looks fresh too. My focus should help me follow it. इधर है। There you are. Let's see where you lead. अबे अच्छा ट्रेल ही है रही। Fanghorn that breathes fire. I think I found Laren's new friend. I'm gonna have to take it down. Frost will just stay still for me, huh? I'll catch you eventually. अबे ये तो बहुत तेज भाग रहा है। कौन अटक गया? भाई मैं ये नहीं चाहता किसी को भी अलर्ट करूँ, ये जो फालतू के जानवर इधर खड़े हैं ना, मेरे को इसको हंट करना है। साला बहुत तेज भाग रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। That's a lot of lance horns. We're gonna take a hit from lance horns antlers. अबे नहीं, नीचे नहीं उतरना था। Focus on the Fanghorn. That's it. मिशन कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, ये वाला था भाई। कितने फैंगॉन चाहिए? Now I need to get those parts for Laren. That should be enough salvage for Laren's armor. Just have to take it back to his camp. भाई क्या मिशन था ये? इतनी मेहनत करवाई बताओ।
मान ये कौवा कहाँ से मर गया? Easy there. क्या ये रॉक थी? अच्छा भाई, इन मशीनों को मारना इतना जरूरी है, उसका कारण ये है कि मेरे को चाहिए स्क्रैप, मेरे को मेटल चाहिए, मेटल शार्ड। Here's that fang horn you wanted. Most of it, anyway. Yes, this is it. This will make my armor truly stand out. Unless, maybe I can add, It's about time you got started, isn't it? You're right. Can't make the perfect armor if I never light the forge. Thank you, Aloy. Maybe you'll come back around when Karuf does. See me win that prize? I can try. I've got some prime salvage for you. सेजल सक्सेना भाई हेलो, इस गेम का प्राइस क्या है? असॉल्ट क्यूब की लाइव स्ट्रीम कब करोगे? एम तो मस्त है तुम्हारा भाई। यार ये पता नहीं क्या रीज़न है, यूट्यूब का ना चैट, कई बार चैट दिखती नहीं है भाई। मैंने अभी बंद करके ना स्ट्रीम दोबारा चालू करी, तब चैट दिख रही है भाई। ये क्या सीन है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मतलब जो मेरी पहली स्ट्रीम थी, पता नहीं दूसरी स्ट्रीम थी, उसमें भी मेरे से बहुत सारी चैट मिस हो गई थी, जो कि मेरे को दिखी नहीं थी वहाँ पे। और जब बाद में मैंने स्ट्रीम देखी थी तब चैट दिख रही थी भाई। कुछ तो लफड़ा है भाई इसका यूट्यूब का। अच्छा ये कुछ दे रहा था ना, ये आर्मर दे रहा था ना मेरे ख्याल से, पता नहीं भाई, मैंने देखा ही नहीं आर्मर। अभी कॉल भी आ रही थी मेरे फोन पे। ये ले लेता हूँ भाई, स्मॉल कोर। Nice. Good call. Yeah. नहीं, पार्शल करते हैं वहाँ पे जो हमारा वर्कबेंच है, और फिर वहाँ से वर्कबेंच से थोड़े से जो अपग्रेड मेरे को करनी है वो कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद मेन मिशन भी चलेंगे, ठीक है ना। वर्कबेंच कहाँ पे है? ये यार बे मतलब के साले अपग्रेड मिल रहे हैं, बताओ इसका क्या करूं मैं? प्रोटोटाइप इम्पैक्ट स्पाइक थ्रोअर। ये मेरे को फेंकनी नहीं आती स्पाइक सी ना, कैसे फेंकते ये भी नहीं होता मेरे को। इसको अपग्रेड कर लेते हैं। अबे अभी ये क्या है साला नया मटेरियल चाहिए अभी। ये डीप लेशर्स स्पार्क कोयल, इसको यार यूज कैसे करना है? आई हैव नो आइडिया। आउटफिट, आउटफिट इसने बंदे ने दी नहीं थी आउटफिट एक, आई थिंक दी थी ना, पता नहीं भाई। मैं ये अपग्रेड कर लेता हूँ। एक एम्प्टी स्लॉट मिल गया इसमें मेरे को, बहुत बढ़िया। ट्रैप नहीं, पाउच, पाउच की अपग्रेड है मेरे पास।
नाइस। इसको इक्विप कैसे करते हैं बाय द वे? अच्छा यहाँ पे लगाना है, ठीक है। साली बेसिक चीज नहीं बता भाई मेरे को। एक मिनट, बो कौन सा था वो? हंटर बो नहीं, ये नहीं था, ये वाला था आई थिंक, है ना? अच्छा इसको अपग्रेड करना पड़ेगा भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलराइट, मेन मिशन पे चलें। Why else would one leave the glory of Zanzibar? कहाँ पे है मेन मिशन? उस तरफ है भाई। अबे यहाँ से रास्ते ही नहीं है, what the hell? Calling gently. अबे यार कैसे जाऊंगा उस तरफ? इतना बड़ा गेट लगा रखा है सालों ने। ओके मैं फास्ट ट्रैवल कर लेता हूँ भाई, इतनी मेहनत क्यों ही करनी है ना? ये मतलब इतनी दूर आया मैं। ओके इसके पास एक ही है मेरे ख्याल से, ये वाली कैंप फायर है ना, यहीं चलते हैं सीधा। अबे इसको क्यों पकड़ लिया? भाई साहब मेरे पास तो वो भी कम हो रहे हैं अब, बैटल चार्ट क्या करूं मैं? मेरे को यहाँ पे जाना है क्या? Machine's weak to fire. ओके इन मशीन्स को तो मेरे को मारना पड़ेगा।
भाई क्या इलाका है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स। नाइस। ये कौन सी मशीन है भाई? भाई अंडर वाटर स्टेल्थ करके देखूं जरा, क्या मैं इसको मार पाऊंगा? रहने दो भाई, ऑक्सीजन खत्म हो रही है मेरी। I'll dry off. Eventually. This is it. Location of the coordinates I scanned from the spire. A workshop underneath a dead Horus Titan. Just the kind of place Silence would slink away to. But what was he doing here? That device is blinking. I guess Silence wants me to check it out. Just wait. Interrogation log. Okay, ये मैं संभाल के रख लेता हूँ भाई। Kind of log, most of it's redacted. Looks like Silence. यार यहाँ पे वर्कबेंच क्यों भाई? कुछ गड़बड़ है भाई। भाई मैं नहीं कर रहा ये, इसमें मेटल शार्ड 50 के 50 लग जाएंगे अपग्रेड करूँगा तो, फिर मैं वो नहीं बना पाऊँगा एमओ उसके लिए। वो के लिए डालो मेटल शार्ड दे दो। पहली बार कमी पड़ी है भाई मेटल शार्ड की मेरे पास। Stuff for the stash. Poor Hades. So cramped in there. No room to think. You can't even speak. Now the processing orb of a Titan, on the other hand, well, you're used to that. But once I load you on that, you'll be so much more comfortable. Until interrogations begin, anyway. ऑलराइट, तो ये चाहते हैं मैं यहाँ पे ये बटन दबाऊं, बटन दबा देता हूँ। ओके, और तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, राइट? Aloy, consider this message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead, a perfect cage for our mutual friend, Hades, in order to render it cooperative. Tell her what we discussed about the mysterious signal that gave you life. Signal only meant for me. Signal was received for 7.22 years and ceased. Cannot compromise. Try every boot, but entities will still fail. Back to that, are you? Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. As for where to find a backup, well, you'll need to trot along after me to find out. He thinks he's got it all figured out. Bastard. But I guess there's only one way to find out where he moved the orb. मेरे को इसका पीछा करना है भाई। बड़ा ही अजीब बंदा है। फॉलो द ओब्स ट्रेल। अच्छा, ट्रेल।
ये रिट्रेल यही है ना? नहीं, Wonder what makes these crystals grow. Well, I better see where this trail leads. ये कौन सा सिग्नल है भाई? ये देख लूं पहले मैं। ये तो पानी के नीचे है भाई। My focus is detecting some kind of locator beacon. The signal's coming from somewhere below ground. काफी दूर है। Come on. नहीं, ऑक्सीजन लो, मर जाऊंगा। बे सिग्नल कहाँ गया? What the hell? भाई सिग्नल भी गायब हो गया। कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। मेरे को वापस जाना होगा। भाई इस गेम के अंदर इतने बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं भाई, मैकेनिकल मगरमच्छ, और वो कई सारे झुंड में रहते हैं। अगर वो मिल गए ना, कहानी ख़त्म है भाई एलोए की। तो सिग्नल तो अभी भी आ रहा है भाई, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा सिग्नल में। मेरे को लग रहा है मेरे को कोई अपग्रेड चाहिए वहाँ जाने के लिए। मैं अपनी ट्रेल पे चलता हूँ भाई, मेन मिशन की। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। एक मिनट, ये क्या आइटम है? मेरे को लग रहा है इसकी भी जरूरत पड़ेगी। Here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. A crazy AI that wants to kill everything. He couldn't just let me do the same thing and destroy it. And now I'm gonna have to put up with more of his self-righteous bull. इनसे बच के कैसे निकलूंगा अब मैं?
इसकी कमजोरी क्या देखो जरा। Machine doesn't like fire. बट फायर एरो तो है ही नहीं मेरे पास तो वो है शॉक वाला। रुक जा, दूसरा आयरन निकालता हूँ मैं। मर गया। अबे नहीं, ऑलराइट। थोड़ी सी टफ थी भाई ये फाइट, पता नहीं क्यों। आई गेस मेरे पास एरो या मेरा जो वेपन है उतने अच्छे नहीं थे। Water in my boots. भाई ये हरी सी ग्रीन फ्रैगमेंट्स ये भी मेरे को कई जगह मिले हैं, कई ऐसे स्पॉट्स पे मिले हैं जहाँ पे मतलब पहुँचना ही मुश्किल होता है। इनकी भी कोई अहमियत है वैसे, क्या अहमियत है ये नहीं पता, ये तो बाद में पता लगेगा शायद। ऑलराइट, मेरे को इस ओब को इसकी ट्रेल को फॉलो करना है ना। Silence must be pretty confident he's found the backup of Gaia, but how? Every place I've checked, every lead, they've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him? Not much I can do about those vines for now. Metal flower.
ये क्या चीज़ है? पता नहीं भाई क्या है ये? Merchant. Didn't expect Oh to see anyone there! else out here. What's Honora doing this far Might west? be handy to resupply. Ah, no matter, no matter. I can get you stocked up for the wilds if you need. ओके, क्या दे रहा है भाई ये बंदा? हंटर बो। इसके लिए मेटल शार्ट चाहिए यार इतने सारे। कुछ सेल कर दो। रिसोर्सेज भाई ये सारे के सारे अपग्रेड करने के लिए चाहिए होते हैं। ये क्या चीज़ है? सेलिंग फॉर मेटल शार्ड। हाँ ये कर देता हूँ भाई मैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सेल करना भाई, ये तो खाना था मेरे ख्याल से, है ना? नहीं नहीं नहीं, टूथ है कोई। ओके काफ़ी सारे आ गए मेरे पास। अब देखते हैं ये क्या बेच रहा भाई। रोस्ट हंटर बो। ले लेते हैं यार, ये भी अच्छी चीज़ है वैसे। स्लाइसिंग पता नहीं क्या है ये लेके देखता हूँ भाई, बढ़िया चीज़ लग रही है मेरे को। बाय एंड इक्विप, कहाँ इक्विप करूँ मैं? नाइस। आउटफिट बाद में देखेंगे। That's a very efficient piece of hardware you just bought. भाई ये यूज करके देखूंगा, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा ये वेपन। मैंने इसका वीडियो देखा था और फॉलो द ओप्स ट्रेल, हाँ वही तो कर रहा हूँ फॉलो। Looks like the trail goes into the hillside. A ruin. Okay. Let's see where this goes. I guess Silence used that machine to haul his prize. प्रोसेसर। That must be the orb Silence stuck Hades in. And that door. Looks like a Pharaoh facility. Or a Zero Dawn?
Come on, Hades. You still in there? अबे ये क्या हो गया? कहाँ पहुंच गया मैं? ये कोई विजन है मेरे ख्याल से, रियलिटी तो नहीं है भाई, डेफिनेटली। Hades? Is that you? System threat detected. You don't look so good. You are the AI come to destroy me. Yes. Permanently this time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured Gaia back up. Then Gaia is dead. Earth and you too. Despite malfunctions, I have won. मेरे को तो लग रहा है यार एंड में जाके गाया भी वो निकलेगी, विलेन टाइप। देखते हैं भाई। Silence asked you where to find a backup of Gaia? Data error, memory structures disintegrated. Right. Because that would have been easy. What did Silence do to you, Hades? It's like you've been hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Data error, memory structures disintegrated. You don't remember any of it? I remember you. What, like me beating you at the spire? Okay, that's not going anywhere. Do you know where Silence went? No, he departed 12.8 days ago. Perhaps he... Data error, behavior prediction structures disintegrated. So you don't know anything more than I do. Great. Do you know why Silence dragged you to these ruins? Silence intended you find me here. Obviously. But why? What was this place? Location is where Data corrupted. data error, memory structures disintegrated. My deathbed, he called it my grave. But you... I guess I'll find out when I go inside. When the mysterious signal transformed you, it made Gaia's other subordinate functions conscious too. You escaped when Gaia destroyed herself, but so did they. Where did they go? Each function migrated to coordinates based on data error, memory structures disintegrated. Bunch of crazed AIs, scattered who knows where, doing who knows what. Hephaestus kills thousands every year with the combat machines it keeps making. And you nearly ended the world. 7 more functions out there, cooking up trouble. It's not a happy thought. You are unhappy. Good. Anyone ever tell you you've got a great personality, Hades? Sarcasm detected. Yeah, didn't think so. Silence questioned you about the mysterious signal. The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters woke me to destroy earthly life.
Who would want that? Beta era memory structures disintegrated. Just wait. Just wait. Alright, I'm back. एक मिनट यार, मैं देख लूँ जरा, ये YouTube का ना बड़ा पंगा सा चल रहा है। इसमें चैट मैं पढ़ता हूँ, चैट भाई आगे दिखाता ही नहीं है, अटकी रहती चैट। इसको रिफ्रेश भी नहीं किया जा सकता, पता नहीं इन्होंने एक फीचर ही हटा दिया YouTube वालों ने। जब YouTube के पेज को आप रिफ्रेश कर सकते हो ना, उसमें फ़ोन पे, वो भी फीचर हटा दिया सालों ने। अब चैट रिफ्रेश भी नहीं की जा सकती। उसको दोबारा ही चलाना पड़ता भाई, बंद करके। A mysterious signal. Silence questioned you about the mysterious signal? The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal. And who? Structures disintegrated. Alright. It's time to finish this. Does Aloy still think she can restore Gaia? Save life on Earth? Yeah, Aloy does. Then you are deluded. Extinction inevitable. What would you know, Hades? Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. And there's no tricked-out lands to save you this time. You are incorrect. 3 times Hades extinguished life. What? You remember this? Yes, data intact. No viable biospheres aborted in years 2154, 2161, 2168. So, that's centuries ago. It's what you were designed to do. Current biosphere is version 5. There will be no version 6. There won't need to be. I'm saving this one. Master override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master override activated. Purging extinction protocol.
भाई इसने हेडीज को मार तो दिया, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हेडीज एक्चुअल में Aloy, I see you've dealt with Hades. Yeah. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And using the same spyware. I see, so all those times I called, you could have just answered? But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research, as demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right. Of course. You're just trying to save the world, too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Did you find a backup of Gaia or not? Oh, yes. I believe I did. Where? Voila. Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing, but yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results. That's not exactly a denial, Silence. Take it any way you want. Just to confirm, Hades said that there are backups of Gaia in there. Yes. Or were anyway. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Farrow could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system. Restore control over the terraforming system, save life on Earth. In there. So Hades said. So what are you waiting for? Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a superintelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time. Go get a backup. भाई इसकी मदद क्यों कर रहा है? ये तो बंदा इसके खिलाफ नहीं था, मतलब खिलाफ नहीं, मतलब इसकी सोच अलग है इससे, एलोय से, साइलेंस की, और ये फिर भी मदद कर रहा है, इसको बोल रहा है कि जाके उसको जगा एआई को। क्यों कर रहा है ये ऐसा? मेरे को तो लग रहा है भाई कुछ गलत है। All right. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say, on account of my spear being buried in your throat. Aloy,
Thanks to me, everything you've desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast. But in a situation like this, you say thank you, and I say you're welcome. चलो देखते हैं भाई क्या होता है। पहले आसपास देख लेता हूँ कुछ है तो नहीं है। ठीक है जीजा। What are you waiting for? Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soba. Please step inside. Please step inside. Please step inside. Are you kidding me? I think we're in luck. In luck? The door is completely messed up. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. If you'll be patient for a while longer. See those crystals there? The Osram call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. Oh, I'm sending no. you the schematics now. To build it, you'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That only grows underwater, but you should be able to find some in the nearby lake. The parts are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Well, I already have some deep water kindleweed. Just need to get the parts. गैदर ए लीप लैशर स्पार्क कोयल, ये मेरे को चाहिए थी वैसे। लीप लैशर है क्या चीज वैसे? ये जो भाई कूद रहे हैं यही है क्या? देखो जरा। Okay. हाँ यही है। Where's its power cell? There's the power cell. I can tag it in my focus display. That'll help. I'll have to detach it before the machine goes down. और इसको कैसे डिटैच करेंगे? Key upgrade resource. Those legs were built for leaping. And kicking, no doubt. भाई कौन से यार उसे टूटेंगे, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा।
देखता हूँ ये मार के। अबे नहीं, नहीं इससे नहीं टूटेगा। There goes the part. Gotta pick it up. Okay, got the parts for the igniter. Now I just need to build this thing. There's a workbench near the entrance to the facility. From your time tinkering with Hades? More like extracting the life from the digger. उठाने दे। भाई एक और भी तो था ना। पागल हो गए भाई ये। और कौन सा था जिसके ऊपर अटैच है ये? अबे 2 ही सेल मिले हैं मेरे को। तीसरा सेल कहाँ गया इनका? ये है तो 3 में से। पता नहीं भाई तीसरा सेल कहाँ चले गया। और मेरे को चाहिए ये लीप लेशर के सेल। पता नहीं कोई और भी अपग्रेड मेरे को चाहिए, उसके लिए चाहिए। ओके मेरे को शार्ट भी चाहिए थे इसलिए मैंने इसको मारा है। मारना जरूरी था यार। ओके इसके पार्ट तो मेरे को मिल गया है। नाइस।
ये कौन सा प्लांट है भाई? मेडिकल बेरी, अच्छा। I'll have use for these soon enough. नाइस, मेडिसिनल बेरी आई बहुत ज़रूरी है और ये इकट्ठे करते रहना चाहिए। मेरे को इसकी ना कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। अभी तो मैं फ़िलहाल 12 ही इकट्ठी कर सकता हूँ ये बेरीज, तो कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लूँगा मैं, उसके बाद आएगा मज़ा, फिर मैं हो जाऊँगा इनविंसिबल। ठीक है, रॉक होगी मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, ऑलराइट। यहाँ पे क्या है? वर्कबेंच है। इसीलिए था वर्कबेंच, ओके। अब मेरे को क्या बनाना है? स्पेशल गियर, पुल कास्टर। अबे ये नहीं चाहिए। नहीं, आई थिंक पुल कास्ट क्या बनाना क्या है? मिशन देख लेता हूँ भाई मैं। क्राफ्ट द इग्नाइटर। इग्नाइटर क्या चीज़ है भाई? ये पुल कास्टर है, ये रहा इग्नाइटर। अच्छा ये है, यही तो करना था। नाइस। मेरे ख्याल से और भी अपग्रेड था मेरे पास। इसका अपग्रेड है? नहीं, किसी का अपग्रेड था मेरे पास यार। ये भी कर ही लेता हूँ भाई। There. Bye. Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Indeed. A useful combination. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Alright. सबसे पहले तो भाई वो इसके ऊपर कोयल वगैरह जो लगानी वो लगा लूं। इसके ऊपर कोयल लगा सकता हूँ, है ना? नहीं। इंक्रीज डैमेज अगेंस्ट नॉक डाउन एनिमीज, ये क्या चीज़ है? इंक्रीज द एबिलिटी टू स्टैगर एंड नॉक डाउन एनिमीज विद इम्पैक्ट और एक्सप्लोसिव डैमेज, ये ज़्यादा बढ़िया है। Great. एक मिनट भाई, मैं इग्नाइटर को लगा सकता हूँ? कहाँ गया इग्नाइटर? पियर, बाइक थ्रोअर,
अबे इग्नाइटर कैसे लगाऊंगा? ये नहीं समझ आ रहा है भाई। इग्नाइटर है कहाँ पे बाय द वे? स्पेशल गियर ये रहा, बट इसको लगाऊं। इंस्टॉल्ड ऑन द स्पीयर। अच्छा, स्पीयर पे लगा ये अलग से कोई वो नहीं है वेपन, स्पीयर पे लगा हुआ है। चलो पहले बता दो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बताओ। I'd step back if I were you. Please step inside. Finally. I think I'm in. Then by all means, proceed. Now that I have this igniter, I could blow up that fire gleam that I've seen before. Focus on the task at hand, Aloy. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इस गुफा में मेरे को दोबारा आना पड़ेगा कुछ चीजें उठाने के लिए, है ना? Place is flooded. And there's another gene-locked door on the other side. But that's where any Gaia backups would have been stored. I have to find a way to get over there. पहले तो यहाँ से सामान उठाऊं मैं। ये क्या चीज है? वेस्ट ट्रेविस स्टेट। मेरे को इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है? आई हैव नो आइडिया। Well, this is familiar. Picking my way through ancient crumbling ruins while you spy on me through my focus. Stop waxing nostalgic and concentrate on finding a backup. नो व्हाट भाई, इससे ऊपर कैसे जाऊं मैं? इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा अच्छा, उस तरफ जाना मेरे को, ऊपर नहीं जाना। नाइस, लेकिन इसके ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं? Might be a good idea to drop that ladder. नाइस, आई नो। अगर मैं वहां से जंप मारूं तो शायद हो सकता है वहां पे जा पाऊं। एक मिनट, यहाँ से जंप मारूं? हाँ, जा सकता हूँ भाई। Door's locked. But there's some kind of device next to it. Energy cell. That did it.
भाई क्या जगह है ये? मेरे को सेल चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, बट वो सेल निकालूंगा तो दरवाजा बंद नहीं हो जाएगा? What's above me? It's caught on that. अबे कहाँ फंस गया था मैं? तो यहाँ से तो इसको खींच नहीं सकता हूँ, इसका मतलब दूसरी साइड से इसको धकेलना पड़ेगा, लेकिन दूसरी साइड जाऊंगा कैसे मैं? अच्छा दरवाजा बंद नहीं हुआ भाई, मेरे को लग रहा है दरवाजा बंद हो जाएगा। इससे खुला क्या भाई तुम्हें? मेरे को समझ नहीं आया भाई। भाई किस चीज की पावर सप्लाई है ये? नहीं आई थिंक मेरे को यहाँ पे ये पावर सप्लाई ही ऑन करनी थी, क्योंकि मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो आई गेस अब मेरे को दूसरी साइड जाना पड़ेगा, और वहां तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, है ना? ऊपर क्या है? यहाँ तो मैं आके फंस गया भाई, मैं ऊपर भी नहीं जा पा रहा हूँ साला। क्या मजा आ गई ये। हाँ जी, मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा है जाने के लिए। गलत और गिर गया मैं, पता नहीं कहाँ गिर गया हूँ। पावर सेल रिमूव करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, आई गेस। नहीं ये भाई साहब कहाँ फंस गया हूं मैं? नहीं निकल पा रहा है। इसको अंदर तो नहीं धकेलना? हाँ भाई अंदर धकेलना था। बहुत बढ़िया, कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया मैं। What was this room for? Looks like there is another console that needs power. पावर सेल कहाँ से लाऊं अब मैं? This looks like the same device from the other room. Maybe I can use the energy cell here. बट एनर्जी सेल कहाँ से लेके आऊंगा? अच्छा
बहुत अजीब पजल है भाई ये। भाई वापस आ गया। क्या हाल है सर जी? वेलकम बैक, वेलकम। भाई मैं तो अजीब ही फंस गया हूँ यहाँ पे। इस पावर सेल को यार करूँ क्या इसका मैं? आई हैव नो आइडिया भाई। भाई अजीब समस्या है ये तो। पहले इसको मैं इधर करके देख लेता हूँ भाई, हो सकता है यहाँ पे कोई पावर सेल मिल जाए मेरे को। Could use my focus here. कोई रास्ता होगा, रास्ता तो होगा बट वो ढूंढना पड़ेगा रास्ता भी साला। आई थिंक यहाँ पे रास्ता बन जाएगा। ये तो लॉक्ड है और ये खुलेगा तब जब भी वहाँ पे पावर सेल डालूंगा। एक मिनट, अगर मैं इसमें पावर सेल डालूंगा तो क्या होएगा? नहीं, ऊपर तो नहीं जा पाऊंगा मैं। पहले इसमें डाल के देखता हूँ। This console shut down. Elizabeth and Travis Tate. ये क्या भाई? Boy! I tell you, Liz, what I just done gonna make you love me. I just imagine them far zenith rapscallions opening this fake guy we made for him. And I thought, what this really needs is a signature. This isn't a prank, Travis. I know. All I did was just script a couple of avatars. A little you, a little me. To deliver our message of doom. Real personal-like. Would you just send it? As soon as it's done compiling, then you and me should celebrate. I brought party fixings, pizza rolls, absinthe, a couple of hacky sacks. I'm heading back to Bryce as soon as this is done. Color me confounded, Liz. How is it that someone like you, a paragon, damn near saint, could love this world so damn much, but no one in it? I mean, have you ever even had a friend? Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. If you would, please. Logic bombs off. Here it comes, far as Z-nuts. Just keep being the best at what you do, Travis. Always admire you from afar, Liz. It's where my mama's grave. And she was religious. Travis was wrong. Elizabeth was trying to make sure life had a future. She cared about everyone. I'm not so sure. The exceptional walk a path of solitude, Aloy. As you and I are well aware of. ये कौन है?
भाई ये एलिजाबेथ थी ये बंदी। आई मीन जो ये एलोए है इसका जो डीएनए है ये इसी एलिजाबेथ बंदी का डीएनए है। और ये लोग जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं मतलब एडवांस सिविलाइजेशन जो हमारी सिविलाइजेशन बताई जाती है वो उनके लोग थे ये लोग एलिजाबेथ वगैरह। इन्होंने ये सारे इस फैसिलिटी में बैठ के ये गाया नाम की एआई बनाई थी जिसने इस धरती को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एलिजाबेथ के डीएनए से मशीनों ने एलोए को बनाया, ये जो लड़की है। तो क्योंकि इन दोनों का डीएनए सेम है इसलिए हर एक फैसिलिटी में जहाँ पे एआई है वहाँ पे अंदर घुसने के लिए कोड चाहिए, मतलब वो चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। तो एलोए वहाँ पे घुस सकती है क्योंकि इसका डीएनए और एलिजाबेथ का डीएनए सेम है, यानी दोनों एक ही हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है भाई ये। मेरे को लग रहा था कुछ होगा यहाँ पे बट कुछ भी नहीं था, ये तो बस कट सीन सा दिखाया इन्होंने। ये क्या भाई? What do we have here? ये ले भाई लूट करने के लिए पावर सेल, बताओ। ओके वापस मैं उसमें लगाता हूँ और शायद ऊपर दरवाजा खुल जाएगा। नाइस एक्सप्लेन किया भाई साहब। गेम खेलोगे तो फिर समझ आ ही जाएगी थोड़ी बहुत बातें। बाकी अगर ये गेम्स हिंदी में होती ना तो और अच्छी तरीके से समझ आती, बट इंग्लिश में है साली, ये भी बड़ी समस्या है भाई। There's another panel up there that I should be able to pull open. I'll have to climb higher to reach it. ये भाई पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे साले। पहले मैं देख लेता हूँ उधर क्या है। यार इसके ऊपर भी कुछ है सप्लाई सी, लेकिन इसके ऊपर कैसे जाऊंगा ये नहीं समझ आ रहा मेरे को। एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ यार, यहाँ पे कुछ है तो नहीं है? नहीं ये दरवाजा तो बंद है। नो कुछ भी नहीं है। लेट्स गो देन, वापस चलते हैं। अबे कूद जाए यार, क्या मजा गई है। भाई अगर ये दरवाजा खुल जाता ना तो मैं अंदर जा सकता था वैसे, लेकिन ये दरवाजा ही बंद है साला। और ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं यही आना था। ये क्या था? My pullcaster can latch onto that from here. I have to jump. अबे इससे आगे कहाँ जाऊं? I can't make that jump. But Okay. if I glide. अच्छा
This'll break my fall. नाइस। भाई ऑलमोस्ट भूल ही गया था मैं, मेरे पास ग्लाइड भी है। I don't think I'm gonna get to the door from here. सप्लाई भी तो लेनी है। अब वापिस जा पाऊंगा मैं? गलती तो नहीं कर दी इधर आके मैंने नहीं, थैंक गॉड मारा नहीं। कई गेम्स में भाई अगर पानी में बंदा गिर जाए ना तो मर जाता है वो। ऊपर कैसे जाऊंगा? ये अलग समस्या साली। ऊपर जाने का कोई तरीका नहीं है भाई। वो लैडर भी भाई नीचे नहीं है, क्या करूं मैं? बस भाई नीचे से कोई साला जानवर ना आ जाए और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ से मैं वहां गया था, वहां से कहाँ जाना था? अच्छा उधर सामने। अबे नहीं। एक मिनट, इस साइड क्या है वैसे बाय द वे? Now what? Find this in my stash later. ये सप्लाई लेने के लिए आया हूँ इधर मैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। What the hell? इसके ऊपर कैसे जाऊंगा यार? No. ऑलराइट, बाद में देखेंगे भाई। अजीब है ये पजल वैसे। ओ लेटर ये रही। मेरे को उधर भी लेटर गिरा देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को दिखे नहीं दरअसल। अगर दिख जाती तो मैं डेफिनेटली गिरा देता। इतना लंबा साला घूम के ना आना पड़ता मेरे को। ओ, यहाँ भी जा सकता हूँ मैं? ये नहीं पता था मेरे को। नहीं ट्राई करता हूँ भाई मैं। मेरे को वहाँ पे सप्लाई लग रही है, वहाँ पे सप्लाई होगी डेफिनेटली। एक ही ट्राई करूँगा भाई, बार बार नहीं करने वाला मैं। बिल्कुल पीछे आ गया ये। Compile complete. Data file bearing promise ready for transmission.
बस यही था यहाँ पे। साले रुक जा रुक जा रुक जा। Always admire you from afar, Liz. It's where my mama's grave. Yeah, she was religious. अबे यार बार बार जरूरी दिखानी है एनिमेशन, देख लेना एक बार। Wings holding up? नाइस। आई थिंक सामने जाना मेरे को, वहां पे भाई डर ही लग रहा है, गिर गया ना साला। इतना घूम के आना पड़ेगा दोबारा। There's more of the facility over there. I better take a look. इधर सामने? What's in here? There's another locked door. Looks like this is connected to the door. It needs a code to open. अबे कोड चाहिए। There is a Moldova brain hack of course, but also up and coming little devil like ये कोड है क्या? 7482 7482 Get it here. From Travis Tate. This place turned out a lot of malware before Zero Dawn took over. भाई क्या इमोजियां सी बना रहा है तू? Has a number. Balls, dude. How loud is it out there? Outside the noise dampening field? 150 decibels. Well, I guess we got privacy. What's the hap, Trav? You and me go back a ways. But I never saw you cheat no one. Why start with Far Zenith? I was gonna tell you about it. They get a copy of Gaia, I get a spot on the Odyssey. Go. But I told them, I said, make it 2 spots, because I'm bringing my friend Trav. Gosh, Hank. Sounds like the dampening field done slipped. You all right? No, I'm cool. Okay, got a personal field right here, see? Now, I know your ears ain't working so well just now. But see that text transcribing every word I say? Good. While I dial the music out there up to 170 decibels, how about you type in that transmit code? There you go. And that's all of it? वो बंदा मर गया मेरे को लग रहा है। Thank you, Hank. ये क्या है? The deal's off, Tilda. Zero Dawn got its ectogenic chambers.
Far Zenith needs the Apollo database. There's no reason this incident... You tried to steal Gaia. Getting I close. had nothing to do with it. And you punished those responsible. Your logic bomb has them scrambling to restore vital systems. I'm really supposed to believe that you knew nothing about this? Please, Liz. Humanity's chances are slim as is. You may not approve of our plan. But what if we're the only ones to survive? Don't you want us to have Apollo to remember our common past, our mistakes? I'm begging you. Fine. You'll get your copy of Apollo. Thank you. Let's speak again before... Goodbye, Tilda. Time to let go. Elizabeth sounded sad at the end. I think this was personal. Indeed. भाई साहब क्या पजल बना रखे हैं। मैं किधर जाना है मेरे को? इधर तो पता नहीं भाई, इधर जा सकता हूँ कि नहीं। जाना तो इधर ही है। उधर भी कुछ है वैसे, बट क्या मैं उधर जा पाऊंगा? भाई गलती तो नहीं कर दी मैंने? कहीं साला दोबारा घूम के जाना पड़े, लग रहा है मेरे को गलती हो गई है। अबे तेरी भाई साहब, ये तो लंबा हो गया भाई चक्कर। और वहां पे मैंने कोई लेटर भी नहीं गिराई भाई। बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा यार ये तो। मेरे को पता भी नहीं वहां पे कोई लेटर है भी कि नहीं। वाह डूड। इतनी मेहनत चली। हाँ यहाँ पे लेटर थी भाई, ये गिरा देनी चाहिए थी मेरे को लेटर। नो भाई इतना लंबा जाना पड़ेगा मेरे को। वाकई में भाई लंबा ही जाना पड़ेगा। चलो क्या कर सकते हैं अब। भाई मेरे को नहीं पता था वो ब्लास्ट साला मेरे को नीचे गिरा देगा। वो भाई यहाँ तो लेटर गिरा रखी है ना। हाँ यार यहीं आया था मैं सीधा, इतना लंबा मैं घूम के आया हूँ तो भाई मैं हर प्लेटफॉर्म पे लेटर गिराऊंगा। वो बस भाई एनिमेशन देख देख के परेशान हो गया मैं तो। ओबे बच गया भाई। ग्लाइडर थोड़ा लेट खुला था, पता नहीं क्या चक्कर था ये भाई, मेरे पीसी का चक्कर था क्या था। I should be able to glide over. नाइस, लेटर गिरा देता हूँ भाई।
अब सही है, मैं गिर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अबे गिर गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई ये लेज ग्रैब नहीं करती भाई अपने आप। जिस तरह कुछ गेम्स में होता है ना कि अगर आप लेज के थोड़ा सा भी पास हो ना तो लेज अपने आप ग्रैब हो जाता है, इसमें वो नहीं है। इधर क्या है भाई? बाय द वे ये एरिया मैंने देखा ही नहीं। नहीं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। जी ये नहीं एरिया, ये नहीं देखा था मैंने। ओह अच्छा हुआ भाई मैं गिर गया, नहीं तो मैं इस एरिया में ना आ पाता। पता लगे सिर्फ क्रेट ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। मेरे को भी ऐसे लग रहा है क्रेट ही थी सिर्फ। भाई क्या मजाक है। भाई क्रेट ही थी सिर्फ। That's it. नहीं नहीं ऊपर 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 ऊपर। हाँ शाबाश। This easy? नाइस भाई ये तो मैंने स्टंट मारा वैसे इधर आना। गेम के हिसाब से पॉसिबल नहीं था बट मैं आ गया। ओके मेरे को अब इधर जाना है। भाई आराम से ये लेज नहीं ग्रैब करती, ये मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा। Okay, so much for the flooded maze. Hold for identiscan. Identity profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soba. Please step inside. अभी एआई बोल रही है डॉक्टर सोबैक, तो ये इसलिए बोल रही है क्योंकि एआई को लग रहा है कि ये डॉक्टर सोबैक है, क्योंकि इसका और एलिजाबेथ सोबैक उसका नाम है, इन दोनों का डीएनए सेम है, इसलिए ऐसा लग रहा है इसको। इसलिए हर जगह जा सकती है, जहाँ पे एलिजाबेथ जा सकती थी ना हर जगह वहाँ पे एलोय भी जा सकती है भाई। बस इसकी ये क्या चीज़ है? It looks like the power's off, except for that console. It's damp in here too. भाई तो कोई बहुत बड़ा रोबोट लग रहा है। Anything I need. Start looking. अरे भाई से लड़ना तो नहीं पड़ेगा कहीं? मैं तैयार नहीं हूँ लड़ने के लिए। यस हो गया। हाँ भाई
भाई इसने मेरे को इग्नाइटर सा दिया है, पता लगे इससे लड़ने के लिए दिया साले ने। Genetic profile confirmed. Greetings, Dr. Sobek. Do you wish to activate Recluse Spider? I do. Activating. Okay, powering it up. That doesn't sound good. It appears to be unstable and very heavy. Be careful. At least I've got power. And there's data here. Looks like this recluse spider thing is a testing apparatus for Gaia and Hades. I better take a look at that access panel. Yes, get to it. भाई पहले आसपास देख लेता हूँ मैं, मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा जो कुछ भी है। भाई ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को इससे लड़ना पड़ेगा? Okay. I think those circular pods are repositories. One loaded with Hades backups, the other with Gaia. What are you waiting for? Hades is down, but the Gaia repository is stuck. So unstick it. Let's hope you haven't damaged it. Yeah, well, now that it's down, I should be able to access that pod. कौन सा pod? Got one. Two, in fact. I was starting to get worried. Data footprint low. 90% memory free. That can't be right. Gaia was a vast superintelligence. You'd barely expected it. Root kernel. No subordinate functions. It's not a full backup. No. More like a seed from which Gaia's mind could grow if it had sub-functions with which to form a heuristic matrix. So it's useless? I'm afraid so. Without sub-functions. Gah! Aloy, you've done all you could. For what? Nothing? Maybe saving the world is too big a task for any one person. Even you. Wait. It's useless without sub-functions, but there are sub-functions out there. The original ones. Scattered to the winds when Gaia blew herself up? They could be anywhere. You can't find them in time. Even if you did, the mysterious signal mutated them just like Hades. You have no idea. I do. A good one. If it works. It was worth it. You found Minerva, but it won't connect. It's close. Mountains west of Plainsong. Close enough for me to go get it. I was hoping to find all the sub-functions, but one's enough to get started, right? It is. Recover Minerva. One could use it to launch Gaia's heuristic matrix. And when she's conscious, she helps me find the other sub-functions. I go gather them. And rebuild her piece by piece. Very clever. Still think I can't save the world on my own? अभी अब क्या हो गया? Security? Yes, well, about that. Alert! Intruders! Alert! Aloy, I need you to listen closely. These intruders want the same thing you do. Gaia reborn. It's why they're here. Friends of yours? No. They don't know me. The data pulse I transmitted indicated that a Gaia backup could be recovered here was anonymous. Now, they're very powerful, but they won't harm you. Not when they see who you are, what you are. A clone of Elizabeth Sobek, a genetic key with which they can reboot Gaia and rebuild the system. They need you. I warned you, Silence. For once, Aloy, submit to the inevitable.
Open the hatch. First I rebuild Gaia, save life on Earth, then I track you down and end yours! I'm trying to help you here. Try spying on me with that. There. New focus, spyware free. Okay. Think. I don't care how powerful they are. The only thing that can open that hatch is me. Question is, can I find another way out? भाई ये क्या है? खोल भी यही सकती है, बंद भी यही कर सकती है. Not much, but maybe it's a way out. Genetic profile confirmed. Entry authorized. अबे? Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. ये कैसे खुल गया भाई? सोबेक की ये क्या पजल है भाई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. Looks promising. Beta. वो भाई ये ओरिजिनल है क्या? एलिजाबेथ. या क्लोन है उसका? पता नहीं भाई क्या चल रहा है ये. Do we have it? Fantastic. Did the pulse originate here? No. Has someone... Something wrong? Shit! Spectres, Beta! Wow. अबे ये कौन है? भाई ये तो स्टार वार्स वाला बंदा नहीं है ये? नहीं स्टार वार्स वाला था कि कौन था भाई? ऐसा एक गंजा सा था भाई. Any idea what the hell a clone of Elizabeth Sobek is doing here? भाई ये तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है स्टोरी. Maybe Gaia made one. When it destroyed itself, a Hail Mary to repair the system. Don't like the sound of that. Nah, don't like it. Don't want it. But the Nope. One's enough trouble. भाई कॉम्प्लिकेटेड हो गई है बहुत ज्यादा स्टोरी. ये तो ओरिजिनल लोग हैं यार, लेकिन ये जिंदा कैसे हैं? इन्होंने मतलब सब कुछ तबाह किया था कुछ कई हजार साल पहले, तो ये 1000 साल की तो इनकी उम्र नहीं हो नहीं सकती. या तो ये किसी पॉड में जाके सो गए होंगे साले. Eric. Yeah. Care to do a little downsizing? Sure. What if she sent the pulse? Then that was foolish of her. But we got what we came for. So let's put it to use. ये लोग हैं कौन बाय द वे? अभी तक तो वैसे मेरे को पता नहीं लगा. जो भी हैं एडवांस है बहुत ज्यादा ये लोग. ये लोग कहाँ से लड़ पाएंगे भाई इनसे? A lot of necks in VR, but that certain tremor as life fades from the eyes. Ooh, no hollow quite gets it. Keep flapping your mouth. It makes a nice target. You actually think that primitive crap you got there can hurt me? This is gonna be fun. अभी कैसे लड़ूंगा इससे?
He's too close. I won't make it. नहीं. I'm not hurting him. I need a way out of here. Maybe if I can bring the whole processor down. I gotta use that console to make it drop more. अबे. Oh, that helps. Oh no 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 no. Little mouse. This kill's all mine. इसको हरा तो नहीं सकता भाई मैं. इसको दूर ले जाना पड़ेगा. इधर आजा. चलो. Don't There. need. Now I can break the cover holding the thing up. Have to end this way. Oh no. Should have run, little mouse. That's not gonna help you, girl. Another one down. What are you up to? अबे. Bye-bye, pretty face. There we go. Come on! Shoot at me! Not that rig! Oh no. मेरा ध्यान ऊपर है यार. Got it. Quit fooling around! You got spunk, girl. I like it. I gotta tell you, this is hard! Reckon that thing ain't gonna help, girl. Come on. Come at me. अबे नहीं. Stem. अबे नहीं. Shoot the coupling, holding up the stem. The stem's got a few couplings holding it up. I need to cut them all. Scream, will you? Ah, not the same as me. Looks like there's two more couplings on the stem. Fight me! Not that dumb machine! Just one more. If that thing comes down, it's only gonna kill you! Better than letting you have all the fun. भाई स्मार्ट. God damn it! What was that? Me killing what you wanted dead. What the hell did you think?
The platform collapsed, body went with it. Right. And since when don't you get what you want, huh? Spectres, search. अबे यार ये भी आगे मशीन सी, ये क्या मजाक है भाई। सीटी बजा के मार रहा है भाई, सही बात है। Out of here. There's a current. निकल। Come on. ऑक्सीजन लो। There's a current. अबे ऊपर ये बैठे हैं साले, काम ज्यादा। There's a current. भाई किस तरफ जाना मेरे को? There's a current. It's heading for an exit. I know how to get out of here. ओ भाई साहब, Swim fast. Come on. इसके अंदर जाना क्या? ओ भाई, भाई क्या ये? Looks like some kind of power room. Currents lead here. Promising. ये क्या चीज है? भाई लोग थे कौन वैसे बाय द वे? एडवांस सिविलाइजेशन। Perfect. बच गई भाई, बच गई। और साइलेंट को पता था भाई इन सब लोगों के बारे में। अभी ये कौन? इसका फादर? ये तो मर चुका है। अच्छा भाई इसको लग रहा था।
It's okay. I'm here. I've got it. Hey, easy. Easy there. Hey. It's right here. The way you were clutching it when I found you, I knew it was important. Where are we? An outpost of the Utaru tribe. Not far from where you fell. How long? 2 days. Aloy, There's no time. I found something. In the mountains west of Plainsong. Yeah. Kept muttering it while I carried you. Look, Aloy, whatever it is that you found, you're in no shape to... I will crawl if I have to. Okay, fine. But before you do that, there's someone you should talk to. An Utaru named Zoe. She told me there's been trouble in those mountains. A cave spitting out deadly machines. Can't be a coincidence, right? Why do we need her? Let's head for the cave. It's in Utaru territory. Her territory. She can help us. You'll see. Fine. Let's go see this marvelous Zoe then. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the seed rises as certain as stone. Zoe? She should be in bed. Aloy doesn't really do should. You're so right. Varl said I should talk to you about the machines in the mountains west of Plainsong. I am a grave singer. My place is here. We can talk once you've healed. What's wrong with it? Her. The name is Ray, not it. She's one of our land gods. And she's dying. But not just dying. She's suffering. Her condition is not your concern. So, if anyone can help, it's Aloy. May I? So what I'm about to do might look bad, but it will help. Spear. I still need to talk. Of course. But this way. The mountains, west of Plainsong. There trouble out there? The Utaru have trouble everywhere. Our fields blighted, our settlements abandoned. But the cave in the mountains is the worst of it. It is a sacred place. Fa, another of our land gods, went inside weeks ago, but
she hasn't emerged. Killer machines pour out instead, threatening to overwhelm us. It's never happened before. Wouldn't be your first sacred cave. ओ भाई इतने सारे क्वेश्चन जो भी है भाई अभी सवालों के जवाब तो लेने पड़ेंगे. Thanks for taking us in. Varl's the one that carried you across the wilds. I doubt anyone else here would have let us in. Or stayed by my side to make sure Aloy was comfortable. We were lucky to find you. I could say the same thing. Sounds like you two have been spending a lot of time together. I wish it hadn't taken an injury to make that happen. I hope you feel better. And soon. You said the tribe has trouble with its fields and settlements. Yes. Whereas once the land gods harvested endless bounty from the fields, now they sow a poisonous blight. War brews among the Tenakth, so their rebels prowl our outskirts. And the machines grow ever more aggressive, hemming us in, forcing us to desert distant villages. Now they're even coming out of our sacred cave. Many in the tribe fear our days are dwindling. Wish I could tell you it was better everywhere else. Not that we're gonna lose hope. इनका कनेक्शन हो गया भाई बढ़िया. Ray and other machines like her, you call them gods? Land gods, yes. For generations, they provided for us, seeding and harvesting the fields of Plainsong. Food for all. A miracle of endless bounty. A farm, run by machines. More than a farm. A blessed land, providing sustenance for my people. Until the derangement. So what happened to the land gods after the derangement? They faltered, year by year. Once they were peaceful. Now they turn on us when we approach, even attack us. They'd always enriched the soil, but for several seasons they've glutted it endlessly with mulch. The fields have turned fetid. A blight that keeps spreading, even beyond our lands. We used to have food for all. Now we barely have enough to feed our children. Must be over-fertilization. Spread by spores, maybe? I don't know. That's not even the end of it. Each land god used to visit the sacred cave once a year, but no longer. Without the rituals of renewal, they've fallen apart. Like Ray. They're dying. And my tribe with them. So the cave is sacred because machines like Ray and the one you call Fa go inside? Yes. Before the derangement, each land god left the fields and made a pilgrimage to the cave. Always in the same order. Doe first, then Ray, then me, and so on. Spattered with soil from their labors. Each reappeared 2 days later, shining anew. Without so much as a scratch. All soil and ornaments of worship washed away. The tribe celebrated each return as one of the 8 hallowed festivals of our calendar. But the derangement changed the cycle. Yes, or so we thought. Over time, the land gods stopped the ritual, becoming crazed and brittle. But 3 weeks ago, Fa trudged inside. The entire tribe lifted their voices in song, praying that the cycle had begun again. Fa has not emerged. What has are machines built to kill? Are machines being made inside? Like in a cauldron? Sounds like it. But the way these
Land gods come and go. It's not like anything I've seen before. You called yourself a grave singer. What does that mean? To all living things, an end must come. It is my task to ease the passage. I try to bring comfort and sing of the renewal that death sows the way for. But I never thought I would have to sing for one of our land gods. I don't even know if Ray heard me. What you did soothed her more than I ever could. It's not your fault, Zoe. And without the second sight, there's nothing more you could have done. You called yourself a grave singer. To all... but I don't even... It's not your fault. And without the second sight... I need to get into that cave. What? No one does that. Well, it's time to make an exception. It belongs to the land gods. Look, so... there is something inside there. Something that could solve problems all over the world. The storms, the derangement... maybe even your broken land gods. What could possibly do all that? A spirit? Yeah. Something like that. AI को spirit बना दिया भाई. Back to Plainsong. Assemble the chorus. Tell how you soothed Ray. Ask their permission to go inside. Great. I'll get my things. She needs rest. You don't have to tell me. I'm fine. Assembling the chorus will take time. Heal first, then join me. Fine. Bed rest. I got it. She does not need you to help her heal. You could come with me to Plainsong. Lend your voice to mine as I try to persuade the chorus. It might help her cause. I'd like to. But I'm afraid she might run off. Really? Very well. Later then. Zoe, wait. It's not, that I don't want to go with you. It's just that I... Is that what you were trying to say? Yes? Then I look forward to more conversation. Yeah. Me too. You're supposed to be resting. Laurel. You should go with her. I'll get better on my own. You trying to get rid of me so you can... No. Not this time. I'll meet up with you in Plainsong when I'm ready. You sure about this? Yes. Go. Get out of here. Okay. So, wait. Who are they? भाई क्लोन है मेरे ख्याल से. वो बीटा बोल रहा था उसको. बीटा मतलब दूसरा हिस्सा, सेकंड वन. इसका मतलब क्लोन है वो एलिजाबेथ का. लेकिन ये बाकी लोग कौन है? आई हैव नो आइडिया. भाई बहुत सारे क्वेश्चन है. Okay, all healed up. ऑलराइट, मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है इतना. और
बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया स्टोरी भाई। ये लोग कौन है मेरे को जानना है, और साथ में बहुत सारी अपग्रेड है और कुछ एक चीज़ें मेरे को फिगर आउट करनी है, वो भी मैं देखूँगा। यही था भाई आज के लिए, और इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट स्ट्रीम में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव फन।